And now here I am taking question number 38 of chapter 21 of SELINA class 10. Let us come to its solution. First, we are taking LHS. See, what is its LHS? 1 plus cot A minus cosec A. So I replace cot. We know that cot is the inverse of 10. So it is cos A upon sin A. And cosec is the inverse of sine. So here I write 1 upon sin A. Same thing with this bracket. 10 is replaced by sin A upon cos A. And sec A is written as 1 upon cos A. Clear? Now I take LCM in next step. So here sin A comes in denominator. And here you can see sin A plus cos A minus 1. And here we will see that cos A plus sin A plus 1 upon cos A. Now I multiply this. See, when I multiply sin A to this 3, I get sin A cos A plus sin square A plus sin A plus cos square A plus cos A sin A plus cos A minus cos A minus sin A minus 1. This we obtain in numerator, and here I get sin A cos A. Now student, here you can see I take the red pen, and here we see that sin square A and cos square A. Or here you can see sin A cos A, sin A cos A and cos A sin A. It means that 2 sin A cos A, and here we can write sin square A plus cos square A whole square. This is our identity, sin square A plus cos square A plus 2 sin A cos A. So you can replace this by identity A plus B whole square. Now student, here you can see that this cos A cancels cos A and sin A cancels sin A, and only what is left? Minus 1. And in denominator we are getting sin A and cos A. So sin square A plus cos square A. Now we cancel this, and I am getting our RHS. Clear? Hello student, I am taking here question number 38 of chapter 21 SELINA class 10. Let us come to its solution. I have written the question. Let us come to its solution. See, student, we are taking LHS for it, and I solve its LHS like this, that what is cot? Cot is the inverse of 10, and 10 is sine upon cos, so it is cos A upon sine A. And cosec is the inverse of sine. Similarly here, 10 is replaced by sin A upon cos A, and sec is the inverse of cos A. Now I take LCM, here sin A, and in numerator sin A plus cos A minus 1, and same thing here, cos A plus sin A plus 1 upon cos A. Now I multiply and open the bracket. So this sin A is multiplied by cos A, then sin A to sin A means sin square A, then sin A. Similarly with cos A, cos square A plus cos A sin A plus cos A. Similarly by 1 minus cos A minus
sin A and minus 1. And in denominator, here comes sin A cos A. Now I change the pen. See, this cos A cancels cos A and this sin A cancels sin A. Now here you can see that sin square A and cos square A. Let me take one step more. Sin square A plus cos square A. And here you can see sin A cos A. So it becomes 2 sin A cos A. Clear? And minus 1 is also there. So write it like this only. And in denominator, there is sin A cos A. So student, all of you know that sin square theta plus cos square theta equal to 1. So I replace this by 1 plus 2 sin A cos A minus 1 upon sin A cos A. Now here you can see that this 1 minus 1 0 and this sin A cos A cuts sin A cos A. What is left now? Only 2 is left and that is our RHS. So LHS equal to RHS hence on. Clear? So student, in this way you can do this question. This question is important for your board exams. Now I move to next question, that is question number 39. What is question number 39? See, root 1 plus sin A. 1 plus sin A upon 1 minus sin A equal to sec A plus tan A. Now student, I am here taking LHS. Take LHS. So what is its LHS? Root 1 plus sin A and 1 minus sin A. Multiply both numerator and denominator by 1 plus sin A and 1 plus sin A in root. Why do we take root here? So that root, you know that root x into root x equal to x. So this is the way to remove the root. So student, here we see that what do I obtain? See, 1 plus sin A and 1 plus sin A. And in denominator also I am getting 1 minus sin A and 1 plus sin A. So how do I solve it? See, 1 plus sin A and 1 plus sin A. So I get 1 plus sin A here. Root 1 plus sin A and root 1 plus sin A. So it becomes 1 plus sin square A. You can say that 1 plus sin A whole square. But it becomes 1 plus sin A. And denominator we see that 1 minus sin A and 1 plus sin A. So it becomes 1 minus sin square A. Root 1 minus sin square A. A plus B and A minus B identity is followed here. So student, here you can see that 1 plus sin A upon root 1 minus sin square A, it becomes cos A. I am taking in root only, it becomes root cos square A. And when I solve it, I get 1 plus sin A upon cos A. This root is solved and it becomes 1 upon cos A plus sin A upon cos A. So 1 upon cos A means 1 upon cos A means sec A. And sin A upon cos A means tan A. और यही हमारी RHS है. Hence proof. तो देखो इस क्वेश्चन में मैंने कहा क्या चेंज किया. मैं चाहती तो यहाँ पर ये रूट के अंदर नहीं इसको बाहर निकाल सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास में साइन स्क्वायर ए पे मेरे को इस तरह से रूट हटता नहीं और हमें रूट को हटाना था यहाँ पर, इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर लिया, रूट रहने दिया और अब रूट हम इजीली हटा लेती है. तो इस तरह से तुम स्टेप को चेंज कर सकते हो. 1 अपॉन कॉस ए की आइडेंटिटी लगाई, साइन ए और कॉस ए को मैंने रिप्लेस करा tan ए से. तो ये तुमने देखा कि हमारा RHS भी आया समझ में. कैसे करना है, यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर बाय 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन। ठीक है, समझ में आ गया। और आइडेंटिटी जो हमने यूज करी है उसको तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 40। रूट के क्वेश्चन इसी तरह से हमें सॉल्व करने हैं। बस तुम्हें यही चीज ध्यान रखनी है कि हमको पूरा रूट अगर तुम लगा लेते हो तो इजी रहेगा तुम्हें सॉल्व करने में। 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर अब हमें क्या करना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर मैं नीचे प्लस, इसको माइनस से अगर कैसे पता लगेगा कि हमको इसको माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना है या प्लस से मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज तुम देखो। अगर मैं नीचे भी अगर इसको 1 प्लस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक एलएचएस ले रही हूँ मैं, 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। अब देखो, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो नीचे मेरे पास में आ जाएगा, दोनों तरफ मेरे पास में माइनस माइनस के साइन आ जाएंगे, क्योंकि मुझे तुम देखते हो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी और ऊपर हो जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमें माइनस का ही साइन चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा है 1 माइनस कॉस ए से, और नीचे भी हमारे पास आया 1 माइनस कॉस ए। और अगर मैं प्लस लेती तो नीचे यहाँ पर प्लस आ जाता और ऊपर मेरे पास में माइनस है। ठीक है, अब हम सिंगल रूट ले लेते हैं। यहाँ मेरे पास आ गया 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पर भी मेरे पास में 1 माइनस कॉस ए है, और नीचे डिनोमिनेटर में तुमने देखा 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। जब मैं इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर रही हूँ तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट रख दिया अपने आप ही, 1 माइनस कॉस ए आ गया, और नीचे मेरे पास में आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और तुम्हें मालूम है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मेरे पास में मैं किससे हटा सकती हूँ, इसको साइन से हटा सकती हूँ। तो 1 माइनस कॉस ए रूट के अंदर आ गया साइन स्क्वायर ए, और जब मैं रूट में से हटाऊंगी इसको तो ये मेरे पास हो गया साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा मेरे पास में, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट, इक्वल टू आर एच एस। हेंस प्रूव्ड। देखा कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। बस ये मैंने बता दिया तुम्हें कि हमको प्लस या माइनस किससे मल्टीप्लाई करना है, वो चीज हम इसके आरएचएस से देखते हैं। मुझे यहाँ माइनस चाहिए था, फिर यहाँ नीचे प्लस आता तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसको माइनस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 41 को कॉपी कर लिया सबने। ओके, अब हम आए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, रूट 1 माइनस कॉस ए। कर सकते हो, आराम से करो शुरू इस क्वेश्चन को करना। जितने मैं बोर्ड पर करती हूँ तुम लोग अपनी अपनी कॉपीज के अंदर करो। साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। अब स्टूडेंट को इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही एलएचएस ही लेना है मुझे, टेक एलएचएस। अब एलएचएस मेरे पास में क्या है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हमको यहाँ क्या चाहिए, प्लस। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो आइडेंटिटी में मेरे पास में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इसीलिए मैं प्लस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, या ब्रैकेट पे तुम ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो, वापस सेम चीज करनी है मुझे इसके अंदर भी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं रूट हटा रही हूँ सीधा, और रूट में मल्टीप्लाई करके मैंने 1 प्लस कॉस ए कर दिया। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन रूट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, रूट साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। और यही हमारी क्या है, आर एच एस। आ गया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था ये। देखो, लेकिन इसमें बस हमें यही ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई किससे करना है, जिससे कि हमको आरएचएस ऑब्टेन कर सके। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे, रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन है,
आई थिंक यू कैन डू बाय योर ओन। चलो फटाफट कर देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को। रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, सेम है 41 क्वेश्चन की तरह से। और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ऊपर भी हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए। अब इसको हमने देखा, ऊपर मेरे पास आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट हटा दिया मैंने। इसको मैंने सॉल्व करा तो रूट कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, रूट में से बाहर निकाल लिया तो आ गया कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। और ये इक्वल किसके है, आर एच एस के। हेंस प्रूफ हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 40।